little kiddos, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 12, that is the ant and the grasshopper. So here in this lesson we are going to study about the ant and the grasshopper. So here students will learn about the importance of hard work. Importance कितनी होती है hard work की and planning ahead. So which of the insect do you see around? Quite often आपको कौन सा इंसेक्ट दिख रहा होता है? स्पाइडर, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, स्कॉर्पियन. You can take on that insect according to you. So क्या होता है? One summer morning, a grasshopper was hopping about, chirping and singing merrily. एक morning क्या हुआ? एक grasshopper बाहर hop कर रहा था and chirp कर रहा था and sing कर रहा था, बहुत मीठा मीठा गा रहा था. Just then an ant passed by. जब एक ant pass होती है, carrying an ear of corn on her back. Heading home, एक ear of corn head carry कर रही है अपने साथ अपने बैक पे और घर जा रही है. Why not come and chat with me? Said the grasshopper to the ant. तुम मेरे साथ आके बात क्यों नहीं करती हो? So the ant did not reply and continued with her work. Ant ने reply नहीं करा, वो अपने काम में continue करने लगी. Why are you working so hard? The grasshopper asked. Grasshopper ने पूछा, तुम इतना hard work क्यों कर रही हो? Come into the sunshine and listen to my merry songs. Sunshine में आओ और मेरे merry songs को सुनो. The ant stopped and said, I am gathering food for the winter. Ant छुपी और बोली, मैं food gather कर रही हूँ winters के लिए. Sunny days won't last forever, so you should also do the same. Sunny days ज़्यादा time नहीं चलते. Grasshopper तुम्हें भी यही करना चाहिए, अपने लिए food store कर लो. Winter is so far away yet, laughed the grasshopper back. Winter तो अभी बहुत दूर है, grasshopper ने बोला. And when the winters came, the ant settled down in her tiny house. जब सर्दी आई, ant अपने छोटे से house में settle down हो गई. She had plenty of food to last the whole winter. उसका काफी food था. अपनी पूरी विंटर्स का मतलब बहुत प्लेंटी नहीं, लार्ज क्वांटिटी में फूड था अपनी पूरी विंटर्स निकालने के लिए. The grasshopper had nothing to eat, so he went to the ant and begged her for a little corn. तो grasshopper के पास तो कुछ नहीं था खाने के लिए, तो वो आंट के पास जाता है और बेग करता है कि थोड़े से कॉर्न दे दो मुझे. No, replied the ant, you laughed at me when I worked. Replied ant ने बोला, no, I will not give you. तो मेरे पे हंस रहे थे जब मैं मेहनत कर रही थी. You yourself sang through the summer. तुम पूरे समर गाना गाते हो. Now you can dance the winter away. अब तुम ठंड में winters में डांस करो. So this story is taken from Aesop's Fables. So that's all for the story. I hope you have understood the story of the ant and the grasshopper, the hard work doing ant and the crazy grasshopper. So that's all for this lesson. Now see you in our next class.